Varukamiva bandhanan Mrityormokshiyamamritatsvaha Om Triyambakam Yajamahe Sagandim Pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan Mrityormokshiyamamritatsvaha Om Triyambakam Yajamahe Sagandim Pushtivardhanam Urvarukamiva bandhanan Mrityormokshiyamamritatsvaha Om Triyambakam Yajamahe. Good evening, friends. Namaste, Jai Guru to all. Welcome to Patanjali's Yoga Sutras. Let us begin the class with a prayer. Heavenly Father, Divine Mother, friend, beloved God, Bhagwan Krishna, Jesus Christ, Maha-Avatar Babaji, Lahiri Mahashay, Swami Shri Yukteswar, beloved Gurudev Paramhansa Yogananda Ji, friend and guide Swami Kriyananda Ji, saints and sages of all religions, great sages Vedvyas, Maharshi Patanjali, Adi Shankaracharya, humbly we bow and touch thy feet. Beloved Lord, grant me prosperity, health, and wisdom without measure, not from earthly sources, but from thine all-possessing, all-powerful, all-bountiful hands. Om Shanti, Shanti, Shanti. Let us invoke the presence of the Gurus. Para
Let's invoke the presence of our beloved Master, Paramhansa Yogananda, into our life, into our mind, our body, our breath, our soul. Let us thank him for his presence in our life. Guru Gobind dou khade काके लागू पाए बलिहारी जाऊं गुरु के गोविंद darshan कराए. Such is the importance of the Guru in our life. Let us now hear, dear friends, a few thoughts on generosity by Swami Kriyananda. Swamiji says, most people think of generosity as merely the giving of material benefits to others. More important, however, and much more satisfying is a generous spirit. A willingness to let the other person shine, even if it means being eclipsed oneself. A happiness in his good fortune, even if it means personal loss for oneself. A concern for his safety, even if in an accident one's own property has been destroyed. Generosity means, above all, recognizing that everything we have and are belongs to God, God alone, and it is to dispose of where he will. Let us do the following affirmations, first loudly and then softly, and then in a whisper. I am happy in the good fortune of all, even more than in my own. For in my happiness for them lies inner freedom. I am happy in the good fortune of all, even more than in my own. For in my happiness for them lies inner freedom. I am happy in the good fortune of all, even more than in my own. For in my happiness for them lies inner freedom. Mentally follow this prayer. All that I have and am is thine, Divine Mother. Dispose of it as thou wilt. Om Shanti, Shanti, Shanti. So, dear friends, as is our tradition, before we begin the study of the Yoga Sutras, there is one story, very interesting story that we need to contemplate ourselves as well. So this is the story of a small family living in a village. The father is a businessman and he keeps going to the city very often. And by this time, the cinema in India had already been introduced. So this businessman, whenever he went to the city, he used to watch some cinema. And when he used to come home, he used to tell his son all about the magical cinema and how the sound and light and everything can be portrayed on a screen, that how there's a screen, there's light, and then the light falls on the screen and magical pictures are produced on the screen. And the boy is just in amazement and wonderment. He's very curious. He really wants to go and see the cinema picture with his father. So on one such occasion, the father is able to take the son to the cinema hall, to the city. And on the way also, the child is curiously asking questions to the father. And again, the father is explaining the various concepts, that there is a screen, there is this light, the light is going to fall on the screen, and then there are going to be some magical sound and light and pictures and so on. And the movie that they are going to watch is based on the Mahabharata. So it's a Hindi Mahabharata picture being screened on in that cinema hall. By the time the father and the son
They reach the hall, the cinema hall. The movie has already started perchance, and there is complete darkness in the hall. So both of them quietly, since the father is familiar with the place, both of them quietly go and sit on the chairs available, and they start to watch the movie. And of course, there is Krishna on the screen, on the chariot with Arjuna and the whole army behind, and in the distant far beyond, trees and sky, and all of that is visible on there. And the child is really very happy in wonderment to see all of that. And then as he's watching the movie, this question arises in, but father, you said all of this is going to be on the screen. Where is the screen? You tell me, where is the screen? Please point out the screen to me. Now the father says, oh, the screen is just behind the picture. So the child kind of points out towards the screen, but the child is confused. Child cannot see the screen. The child says, oh, you mean Krishna is the screen, he says. The father says, no, behind that. So he said, oh, behind him, the chariot and the Arjun was standing on the chariot. Is that the screen? So father says, no, behind that. So he says, oh, the army behind, is that the screen? Father says, no, go behind that. Says, okay, is the sky and the trees that are seen, is that the screen? The father, still pointing in that direction, is unable, as the movie goes on, is unable to point out the screen to the child. So similar is our case, similar is our case. We are in the movie, and we are not only, and this movie is not only true to two senses of sound and sight, it is true to touch, it is true to smell, and it is true to taste. So we are in a 5-sense dimensional movie, and the guru is telling us that you are that screen on which this movie is being played. In fact, you are the light which is being projected on the screen and is playing this movie. But when we entered this world in this body, the movie had already started. And we did not know, even when we are told that you are not this body and mind, you are not this sensual experience, you are the screen behind, means the Om vibration, and you are told that you are the light beyond the Om, the cosmic consciousness, we are unable to grasp it. That is the truth of the whole story. And so how will the child in the cinema hall be able to see the screen while the movie is on? So there is one way in which he can actually see the screen, and that one way is by switching off the movie. The moment the movie is turned off, the child is suddenly aware that there is a screen. So in our life, the practice of Kriya Yoga, the practice of meditation, the practice of calming all our emotions and our thoughts, our breath, our prana, when we silence that with the practice of meditation, we turn the movie off. And only then are we able to perceive the sound of Om. And then we are able to perceive the light that is beyond Om. So we have to turn the movie off to be able to see the screen. That is the way of the Raja Yogi. The yogi does that. He knows the psychophysiological methods of turning off the running picture show so that the background is available for perception. There is one more way. So how come the father and the son both are sitting in the cinema hall, but the father is aware that there is a screen behind the picture, but the son is not aware? Because of experience, because of inquiry and understanding. So because he has knowledge, the father has more knowledge than the son. The guru has the knowledge because he has already transcended the picture show. He has known the reality of the screen behind the picture. He knows the reality of Om. He knows the reality of cosmic consciousness and Christ consciousness. Therefore, that jnana that the guru has is able to know that there is a screen behind the picture. And similarly, same for us, the practice of jnana yoga, of inquiry as to who we really are. Who am I? What am I? Am I this body, this mind, this breath? Or am I the silence beyond all of that? Am I the panchakosha or the aspect behind it? Am I this field of awareness, or am I the objects which are visible on this screen and this field of awareness? So this practice, this inquiry leads us to the knowledge of who we are. And then once we become a jnana yogi, then it is not necessary that we turn off the picture to know that there is a screen behind the picture.
So there is this the marg of Raja Yoga, there is the marg of Jnana Yoga, and Jnana Yoga marg is very difficult. Therefore, the saints tell us that the marg of Bhakti Yoga should be integrated with the marg of Jnana Yoga, because Bhakti will purify the heart, it will open the heart, it will open up your intuitive perception, and only by that intuitive perception will you be able to see the screen behind the running movie of our life. It is a pure movie. Withdrawal from that is done by Karma Yoga. So here comes the role of Karma Yoga. How do you withdraw from the movie? Because firstly, you start to do actions which are good, which are right. Then you start surrendering the actions to God. You have to start realizing that God is the doer. So all of these margs, if we kind of combine these paths to God, to infinity, to the truth of our own being, then we kind of then we don't even have to switch off the movie. Then comes true what Guruji said, that this movie show, this drama of life is for your education and for your entertainment. तब जाके ये समझ आता है कि ये एंटरटेनमेंट चल रहा है, ये ड्रामा है, इसको हमारे को अपने दिल से बिल्कुल नहीं लगाना है, और ये हमें एंटरटेन करने के लिए बनाया गया है, ना कि उसमें उलझने के लिए, ना कि उसमें फंस जाने के लिए, और ना कि उसमें रोने के लिए. उसका पर्पस ही नहीं था ये. पर क्योंकि हमने तब एंटर किया जब मूवी ऑन थी और हमें समझ नहीं आया, हमने सिर्फ सेंसेस के थ्रू ही इस दुनिया में काम किया, तो इसलिए हम डिल्यूड हो गए. और इसीलिए, लेकिन हमारा दिल कहीं ना कहीं फ्रीडम के लिए यर्न करता था, इसीलिए हमारी लाइफ में God sent the Guru. The Guru came, showed us the mirror, gave us the techniques, showed us how to look towards God, towards the infinite, and he helped us to turn off the motion picture of our temporary life and to be able to see the light as well as the screen that make all this motion picture possible. And how all the paths are so important, have their own aspect, and how they help together. So Swami Vivekananda said it would be good if you practice all the four. That means you practice bhakti plus karma plus gyan plus raja. So that is the best way, because it's fastest. One will help the other will support the other, and together all of this will become a very good foundation, and we'll reach freedom very quickly. However, if you are more temperamental towards Jnana or towards Bhakti or towards one particular path, that is good too. That is fine, absolutely fine. Go with what your heart says, follow that path with determination, unceasingly, without stopping, as was explained to us in the Samadhi Pada of the first chapter of Patanjali. Unceasingly, whatever you follow, follow it unceasingly, without stopping, and with sincere effort. Then automatically fruition will happen. You will come to the realization of who you are. And that means, what does that mean? That means dukkha nivritti, anand prapti. What is the purpose of this creation? Eventually, it is to rise above suffering and to get eternal bliss. So for that, these are the various pathways. Okay, so now we come to Patanjali's Yoga Sutras. We did till in Sadhana Pad, we finished till Sutra 15, but let's just revise Sutras 11 to 15 before we move on to 16. So in 11, Sutra 11, Patanjali said that meditation is the great means through which we can control the vrittis. So it's a simple thing which we already know, and Yoga Chitta Vritti Nirodha, we are not to forget that the goal of meditation is Chitta Vritti Nirodha. And here we must remember that as important is the practice of Kriya Yoga. In fact, more than that is important is that we practice the stillness that we attain after practice of Kriya Yoga. So sitting in the stillness after Kriya Yoga practice is extremely essential, because that is the true state of dhyana, when you're totally absorbed, when you don't need even the technique. So that is when this movie will be turned off, actually. So do not just do your Kriya Yoga practice or Hongsa practice and get up restlessly and then involve yourself in daily activities, but rather do spend good amount of time in that stillness, which is attained by the practice of the technique. So that stillness can also be practiced simply, sometimes even in the middle of the day when you cannot even meditate. If you just focus at the spiritual light, go deep into that, just 3-4 breaths. Just do that, you will find that that stillness is always available to us, because it is our own self.
How can it go away from us? It is our own self. It is always available to us, but all we have to do is interiorize ourselves, raise our energy, gaze into the spiritual eye, and just get lost in the space that is beyond the spiritual eye. So just try that. That if you keep practicing that stillness again and again and again, you are touching the screen, you are touching the light that is there beyond the motion picture. So you kind of temporarily turn off, take a breather for yourself, as in rest in that stillness, and then come back and do your daily activities. But important to remember again that even more important than the technique is the practice of stillness that is achieved by the technique. Okay, Sutra number 12, Patanjali says, the root of all afflictions or the kleshas, the obstacles that we talked previously, is the accumulation of the repository of karma. जो कर्म कोश है हमारा, जो एकत्रित हो जाता है over lifetimes and lifetimes, उससे और क्लेश बढ़ते हैं, क्लेश से फिर हम और कर्म करते हैं और ये साइकिल चलती रहती है. अब और ये जो कर्म है ये गुड भी हो सकते हैं और ये बैड भी हो सकते हैं. And in the current life, it may be experienced as pleasure or pain, or it may be adrashta, means in future lifetimes it may appear as pleasurable or painful. So the repository of karma becomes important here. He's talking about how karma actually can create more obstacles. And then he says in Sutra 13 कि ये repository of karma है, ये determine करेगी कि क्या तीन चीजें डिटरमिन करेगी. हमने लास्ट क्लास में कहा था, एक तो स्पीशीज, यानी कि आप किस शरीर में जन्म लेते हैं. आपको मानव शरीर मिला है, आपको जानवर का शरीर मिला है, या आप एक प्लांट हैं, या आप एक जर्म है. ये डिटरमिन होता है पास्ट कर्मा से. तो और दूसरी क्या बात डिटरमिन होती है, आयु, आपकी लेंथ ऑफ लाइफ कितनी रहने वाली है, ये भी पास्ट कर्मा से डिटरमिन होता है. और जो आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, क्या वो प्लेजरेबल हैं या वो पेनफुल हैं, ये सब जो आज हमारे साथ हो रहा है ये हमारे पास्ट कर्मा से डिटरमिन्ड हो रहा है और इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं. तो हम थ्योरी ऑफ कर्मा को हम कभी कभी साइड पे कर देना चाहते हैं, जो कि इस कॉइन के दो एस्पेक्ट्स हैं. या तो हम थ्योरी ऑफ कर्मा को पूरा एक्सेप्ट कर लें और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, तो ये हमें बॉन्डेज की जगह फ्रीडम के पे लेके जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है कि हम जो करेंगे उसका रिजल्ट हम पर ही आने वाला है, तो हम बहुत कॉशियसली करेंगे. सेकेंडली, हम कर्म भोगी की जगह कर्म योगी हो जाएं और सब कुछ भगवान को सरेंडर कर दें, तो ये एक दूसरा तरीका है. लेकिन मास्टर कहते थे कि ज्यादा कर्मा करने की जरूरत नहीं है, कि so many people around me say, oh my karma is so bad and this and that. Forget about karma, just be in the present moment, just think about God in the present moment. So go beyond your little self in this present moment, तो कर्मा वैसे ही ट्रांसेंड हो जाएगा. So ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं हमें सारे ये डेप्थ में इवैल्यूएट अपने अंदर करके चलना चाहिए कि कब हम कर्म के बारे में सोच रहे हैं और क्या हम कर्म के बारे में सोचने में ही इतने उलझ जा रहे हैं कि हम एक्चुअली जो करना चाहिए वो तो कर ही नहीं रहे हैं. हम कर्म भोग के बारे में ही सोच रहे हैं कि ओहो मेरी लाइफ तो कितनी डिफिकल्ट है, मैंने कितना बुरा कर्म करा है बाद में, एंड सो ऑन. नाउ अगेन मास्टर सेड you need very, very, very good karma even to want to know God. So all of us present here need not worry, we have very good karma. And the message that I shared in the morning today on the group said, Master said, I will give you good karma. The fact that we can speak about and listen about scriptures, ये हम अपने इसमें भी हम अपना क्रेडिट ना ही लें तो अच्छा है, because मास्टर हमारे गुरु हैं और उन्होंने कहा है I will give you good karma. So the good karma that we are having today by sitting in the company of each other, of Guru Bhais, and talking about the infinite, this is also being given by the Guru. We cannot take any credit for it. So so the important thing here is, as long as we are sincere towards the Guru, as long as we hold on to his robe, we hold on to his, him, his light, we attune ourselves to him, there is no danger. Then we will not be lost. In fact, I was reading in some other scriptural book, it said that even if you don't want, you will become enlightened if you are in the company of an enlightened sage. So if we have an enlightened guru with us, we have a Sadguru. So that means even if you don't want, we are going to become enlightened. So don't worry on that aspect. Just hold on to him with all your might. छोड़ना नहीं है. You can sometimes, sometimes I say, आप मुझे भूल जाओगे, मैं नहीं भूलूंगी. आप मुझे छोड़ दोगे, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ. अब मैं आपके गले पड़ चुकी हूँ. So sometimes, you can with your guru, with God,
You can do any kind of, little joking. It's like a smile in your own self. You can get angry also with them. You can discuss things with them. If you develop that personal relationship with the guru, he reacts, means he kind of, he talks to you for every little thing. He will guide you. But first, that relationship has to be initiated by you. You have to involve yourself, invite him in your, he's already there, invite him lovingly in your heart and ask him every little thing that comes in front of you. And he's always there to help us, to guide us, because he has been given this job. This is his God-given job, and we have to become enlightened if we keep holding on to him. Okay. So we just said that the repository of karma can cause the type of body we have, the length of life we have, and the pleasure and the pain we have. Okay. Sutra 14, Patanjali said that pleasure is the fruit when you do holy acts or virtuous act, and pain is the fruit when you do wicked or sinful acts. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि हम धार्मिक कार्य करेंगे तो हमारा पुण्य अर्जित होगा, उससे हमें प्लेजर मिलेगा इस जीवन में, और यदि हम अधार्मिक होंगे तो हमारा पाप अर्जित होगा, उससे हमें पेन मिलेगा इस लाइफ में या आगे लाइफ में. सो ये बड़ा सिंपल मैथ्स है, इसको हम याद रख सकते हैं in a subtle way, and doesn't mean that we have to keep calculating in a diary कि आज इतना अच्छा कर्मा हो गया, इतना प्लस प्लस हो गया, इतना माइनस माइनस हो गया. ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. गिव इट टू गॉड, एंड इवेंचुअली कुछ ना समझ आए, कुछ गलती हो जाए तो गॉड, इट इज ऑल योर्स. ऑल द गुड, all the bad, all the right, all the wrong, it is all yours. Give it to him. Master said he likes it that way. Okay. So, Sutra 15. Patanjali says, to the discriminating yogi, everything is painful. तो हम पिछले वर्ष तक प्लेजर और पेन की बात कर रहे हैं, बट यहाँ पर पतंजलि एक नेक्स्ट लेवल के सत्य की बात करते हैं. वो कहते हैं कि अगर आप एक वाइज योगी हैं तो आप जान जाएंगे कि ये सब कुछ ही पेनफुल है, कि प्लेजर के पीछे भी पेन ही छुपा है. हर रोज फ्लावर के पीछे थॉर्न है, हर रोज बुश के पीछे स्नेक है, और कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, और इसको दोनों को ही आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप कह सकते हो कि मेरे को प्लेजर चाहिए पर पेन नहीं चाहिए, या तो दोनों को रिजेक्ट करना पड़ेगा या तो दोनों मिलेंगे. तो ये चॉइस आपकी है. और तो जब योगी डिस्क्रिमिनेट कर लेता है, जब वो रियल और टेम्पररी के बीच में का अंतर, सत्य और असत्य के बीच का अंतर जान लेता है, तो वो ऑटोमेटिकली इस वर्ल्डली डुअलिटी को रिजेक्ट करना शुरू कर देता है. ही सेज आई डोंट वांट टू बी एनी पार्ट ऑफ दिस up and down game anymore. I've played it long enough. So now that decision applies to each one of us. Are we saying to that point, are we saying that we do not want this game of pleasure and pain anymore? I want the eternal bliss that is behind the game. That means ये pleasure और pain का मूवी तो switch off करना ही पड़ेगा. और कैसे हमने कहा एक स्विच ऑफ होगा? राज योगा से, मेडिटेशन से स्टिल होगा, और ज्ञान से आप उसके नॉलेज प्राप्त करेंगे, और भक्ति और कर्म का तो एसेंशियल रोल है ही. तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं. तो यह हमें इसीलिए बुद्ध ने भी क्या कहा था? दुखम दुखम सर्वम दुखम. और कृष्ण ने भी कहा है कि दिस इज एन ओशन ऑफ मिजरी एंड सफरिंग. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डुअलिटी. जो भी प्रॉमिस मिलेगी उसके पीछे, प्रॉमिस ऑफ प्लेजर एक तो फुलफिल नहीं होती है, और उसके पीछे इक्वल अमाउंट ऑफ पेन भी छुपा होता है. ओके, सो नाउ we go ahead to Sutra 16, and in this Patanjali is saying Heyam dukh managatam, meaning Heyam means to be rejected, Dukkham is sorrow, Anagatam is which has not yet manifested. So what he is saying is future suffering is worthy of being rejected, and not having arrived yet, it can be prevented. तो जो अभी हमने कहा था कि अभी जो प्लेजर एंड पेन है वो पास्ट कर्मा की वजह से हो रहा है, और कुछ दृष्ट भी है, यानी कि कुछ बाद में भी आने वाला है. तो पतंजलि यहाँ कह रहे हैं कि जो पेन है फ्यूचर में जो आने वाला है, हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये हमारा राइट है और हमारी ड्यूटी भी है कि आने वाली सफरिंग को हम ट्रांसेंड करें. ओके, स्वामी विवेकानंद सेज some karma we have worked out already, some we are working out now in the present, and some is waiting to bear fruit in the future. All our effort
should be directed to transcend the karma which has not borne fruit yet. Okay, so if anybody wants to talk about this, that how we've already discussed it in this lecture, but let us just revise कि how we are going to avoid future pain. हम क्या क्या करेंगे जिससे हमारा future pain avoid होगा. So anybody who wants to share, आपको क्या लगता है कि क्या आप अपना कर्मा का रिपोजिटरी कैसे नलिफाई कर सकते हो, कैसे मिटिगेट कर सकते हो, आने वाली सफरिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आप प्लीज शेयर करें. I'm waiting for somebody to raise their hands. Okay, yes, Joy. Yeah, please unmute yourself, dear. Om Guru. Om Guru. See, what I have observed is that we need to this pain and pleasure is part and parcel of this our life. Yes, we are on the spiritual path and we are not very expert on this path. So what we need to do is we have to keep deepening our focus onto God. That humming of God divine thing has to be a continuous affair. We can go off track a bit, but we need to come back to the center. We have to become aware of this feeling, and that can happen only then when you're on a regular basis in touch with the divine, whether you're doing meditation or you're doing some kind work, godly work, you're helping someone. That itself is as good as meditation, because whenever you are doing any work which appears to be divine or godly, or you're helping someone, you're giving someone love, care, that without your self-interest, that becomes godly, divine, and that becomes a meditation. Okay. Absolutely, So, yes. Thank you, Joy. And of course, what you've talked about means doing karma yoga, bhakti yoga, and raja yoga, all of them together, increasing our awareness. So yes, it is a combination of all the paths that we need to use every minute of our life. We should not waste any moment. आप अपने आप को ये कॉन्शियसली चेक करें कि आप अपना मोमेंट्स जो हैं वो यूजलेस थिंकिंग में वेस्ट कर रहे हैं. व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी इन दिस लाइफ, विच डायरेक्शन आर यू गोइंग इन, कितने मोमेंट्स आपने कैसे यूटिलाइज करे, इस बात का चेक हमें हमेशा रहना चाहिए. Does anybody else wants to share any other thought about how to transcend suffering that may come to us in the future? Yes, ma'am. Yes, Alka dear. एक्चुअली हमें प्रेजेंट में ही रहना चाहिए, बहुत ज्यादा फ्यूचर में नहीं सोचना चाहिए ये होगा वो होगा. जब गॉड है हमारे पास, गुरु है, तो हम प्रेजेंट में अपने कर्म अच्छे रखें तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली सेफ है ना. और अभी सोच के करेंगे क्या, कल क्या होने वाला है, कोरोना से मर भी सकते हैं, तो अभी आज तो प्रेजेंटली हम हैप्पीली रहने चाहिए. और जब गॉड है, हर छोटी चीज हम गॉड से पूछते हैं. डिसीजन मतलब माइंड में कोई भी चीज आती है ना, तो ये कर ले कि नहीं कर ले. मैं तब सोचती हूँ ऑफिस में भी कोई प्रोजेक्ट भी आ रहा होता है ना, ये मुझे करना चाहिए नहीं चाहिए, आप बताओ गुरु करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. और ठीक है, जो भी होगा ना वो लर्निंग के लिए होगा, वो टेस्टिंग भी हो सकती है, तो इतना हम क्यों इस माया में पड़े. Absolutely, that's a beautiful way of living each moment. So each moment में master said live fully in the moment, the wonder of this moment. इस मोमेंट में पूरा ध्यान लगा दो कि उसमें खो ही जाओ, गेट एब्जॉर्ब्ड इन दैट मोमेंट इन इन्फिनिटी. तो नेक्स्ट मोमेंट आएगा या नहीं आएगा इससे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए. सो ये आपने उस ट्रूथ को, उस स्पिरिट को इस मोमेंट में ही जी लिया, तो जब नेक्स्ट मोमेंट आएगा उसमें भी वैसा ही होगा. तो टाइम जो विच इज एन इल्यूजन, वो अपने आप ही गायब हो जाएगा. आपका काम है हर मोमेंट में अपने आप को अलाइन करना. कीप अलाइनिंग, कीप अलाइनिंग, कीप अलाइनिंग, कीप ट्यूनिंग, कीप ट्यूनिंग. क्या फर्क पड़ता है कि कल होगा या नहीं होगा. वैसे भी अकॉर्डिंग टू द ट्रूथ ऑफ द स्क्रिप्चर्स, हम में से कोई, सबका शरीर ही छूटेगा, हम में से तो कोई मरने वाला है नहीं. वी आर इटर्नल लाइट, हाउ कैन वी डाई, वी आर नॉट गोइंग टू डाई. सो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड जॉय इन दिस मोमेंट. सो व्हाट इज द चॉइस दैट वी हैव. लाइफ में सब कुछ होने वाला है बाहर, हमारे पास चॉइस है लेकिन कि हम अपने आप को अंदर से चित्त को आनंद में रख सकते हैं कि नहीं. और वो चित्त को आनंद में रखने तभी पॉसिबल होता है जब हम गॉड और गुरु से हमेशा अट्यून्ड रहते हैं. फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं, हम फियरलेस हो जाते हैं,
और हम ट्रूली वो एक ह्यूमन पोटेंशियल जिसके लिए बनाया गया है फॉर एंटरटेनमेंट, तब हम ये ड्रामा को देख पाते हैं निडर रूप से, नॉन अटैच तरीके से, और एक आनंदित चित्त के साथ हम इस जीवन को जी सकते हैं। फिर आसपास चाहे लोग ट्रेजेडी होती रहे, कुछ भी होता रहे, मास्टर सेड आपको यू हैव टू स्टे काम अनशेकन इन द मिड्स ऑफ क्रैशिंग वर्ल्ड्स। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आप वो लाइट हो जिसके ऊपर ये सिर्फ मूवी पिक्चर प्रोजेक्ट हो रही है। एंड द पर्पस ऑफ डेथ is to learn that you are immortal. That's what master said. This is his words. So ये जितना भी ड्रामा है जीवन मरण का, ये एक्चुअली ड्रामा है, कोई मरने वाला नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, और वो भी किसी किसी के लिए होगा, कोई तो डिवाइन लाइट में सीधा ही मर्ज कर जाएंगे, हमें क्या मालूम है। वी आर नो वन टू जज, वी आर हियर जस्ट टू लिव beautifully in this moment in a fulfilling way, loving everyone, being happy all the time, trying to do our best, thinking about God, and focusing on the inner presence. So this is what we can do. Yes, Reema, you want to share something? Ma'am, I have a query. Okay, so you can ask your question, but we'll see if we can address it right now or at the end of the class. What is your question? Sure, ma'am. Ma'am, this thing of transcending our karmas and being uplifted. But ma'am, when we originated, so I mean, were we in the bottom of the, but when the whole creation started, so were we all that bad in our karma record that we had to begin from the scratch, all living beings? Okay, so this is a very important question that Reema has put up, and this is whether the chicken came first or the egg came first is the question basically, कि हम ये कहाँ से शुरू हुए. So according to Master, in God Talks with Arjuna and even in the second coming of Christ, Master said that the human being is a special creation of God. So the human came on earth or when already the galaxy was in place, the solar system was in place, the plant kingdom was in place, the rocks were there was water on the earth, there were fishes in the water, there were certain animals were there, and after that the human came, and the human was then given the ability to reproduce and to procreate and to make of his more of his kind, just like a tree has a seed and the seed can create the tree. So according to Master, I am no one to comment any other ways or to discuss the philosophy of the tree and the seed or the chicken and the egg, but this is what Master says, that the human was a special creation of God, but then he became so attached to his body consciousness that he lost his divine potential. He forgot that he was the light and the Om and the screen, and he just became attached to the character, and therefore the downfall began. But since there are other things in creation as well, so yes, यदि कर्मा किसी का बहुत एनिमलिस्टिक होता है तो मास्टर ने ये भी कहा है कि उसको एक लाइफ टाइम के लिए एक एनिमल बॉडी में भी आना पड़ सकता है, and then back to the human body. So firstly, why do you want to think that you are so poor little thing and bad? Why would you want to think that? You are the light of God, you are the child of God. Why would you want to take your thought process to that level? So check yourself, bring back yourself to the point of saying that I am a child of God, and then roar like a lion. You are not that sheepling, you've forgotten who you are. वो कहानी तो बहुत बार हम सब ने सुनी है कि वो भेड़ों के बीच में लायन होता है, वो वैसे ही मिमियाने लगता है और वो वैसे ही घास खाने लगता है, लेकिन एक दिन जब सामने शेर आ जाता है और वो देखता है कि ये मेरा बच्चा यहाँ कहाँ गुम गया है, फिर वो उसको पानी तक लेके जाता है, और जब वो देखते हैं रिफ्लेक्शन में तो वो बच्चे को लगता है कि मेरी शक्ल तो इससे मिलती है, फिर लायन दहाड़ता है और बच्चा भी दहाड़ना सीखता है. तो हमारे लिए वो बड़ा लायन, फादर लायन कौन है? गुरु है हमारे. वो आके हमें शीशा दिखाते हैं कि बेटा यू आर दैट लाइट, you are not a weakling, you are not a silly useless creature. No, don't think like that. Always affirm this, I am a child of God, I am the infinite light itself, and nothing can change that status of mine. सिर्फ मेरी अपनी रॉन्ग थिंकिंग उसको वेल कर सकती है, मेरे सेंचुअल एक्सपीरियंसेस उसको मिसअंडरस्टैंडिंग तक लेके जा सकते हैं, लेकिन यही ट्रूथ है और यही अल्टीमेट ट्रूथ को आपको स्टिक ऑन करना है, अफर्म करना है ऑल द टाइम. ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू आवर
with our class. And of course कैसे ट्रांसेंड हम कर सकते हैं, हम सबको कहीं ना कहीं मालूम है. अब बात बची है अनसीजिंग प्रैक्टिस की, जो कि हमें हर मोमेंट टू मोमेंट करनी है, हमें मोमेंट टू मोमेंट चेक करते रहना है. Yogananda ji used to say, I am tired of hearing people lament. Oh, it's my karma, I can't avoid it. Rima, this is for you. You are not to think like that, okay? All karma can be transcended. What would be the use of the spiritual path if it did not take us away from the ocean of misery and suffering? तो फ़ायदा क्या था ये सब इतना सारा ड्रामा करने का? तो ये स्पिरिचुअल पाथ और गुरु की प्रेजेंस हमारी लाइफ में ये असर्टन करती है कि हमें एनलाइटनमेंट, तो हम एक्चुअली एनलाइटेंड हैं, अभी फिलहाल तो टेम्पररीली डिल्यूडेड है. वी आर फॉरएवर एनलाइटेंड, वी आर द लाइट इटसेल्फ. ओके, व्हेन यू रीच द स्टेट ऑफ द जीवन मुक्ता एंड राइज अबव द ईगो ऑल टुगेदर, इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट कर्मा विल पास यू बाय. हाउ इट विल पास यू बाय? क्योंकि जब जो कर्मा है वो किस पोस्ट से बंधा है? ईगो की पोस्ट से. जब मुझे लगता है कि मैंने ये किया तो उसका फल किस पे आएगा? मुझ पर आएगा. लेकिन जब मैंने स्पिरिचुअल जर्नी में आके अपने ईगो को ही ट्रांसेंड कर दिया, मैंने आईनेस को ही छोड़ दिया, तो वो कर्मा कहाँ आएगा? कहीं नहीं आएगा, क्योंकि वो ईगो जो पोस्ट है जिससे वो कर्मा टाइड है वो ही नहीं है. तो बहुत सिंपल तरीका है, अपने मैं को मिटाना है, अपने मैं पे विक्ट्री पानी है, और ये जानना है कि जो मेरा छोटा मैं है ये एक्चुअली इज द इन्फिनिट आई. दिस होल वर्ल्ड, दिस होल यूनिवर्स इज द आई. ये इस तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना पड़ता है. ये ओवरनाइट थोड़ी हो जाएगा. निरंतर प्रयास करते रहिए और अपने हर दिन और हर पल में प्रयास कीजिए और अपना फोकस उस प्रयास पे रखिए. गोल को तो छोड़ दीजिए, गोल अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा. अगर जिस दिन आप बीज बो रहे हैं उस दिन आप सोचते रहेंगे फल तो आया नहीं, फ्रूट वो तो फ्लावर तो आया नहीं, तो फिर आप रोते रहेंगे. आप अपना ध्यान रखिए बीज को बोने में, उसको मिट्टी पे ठीक से पानी डालने में, हवा लगवाने में, उसको प्रोटेक्ट करने में आपका ध्यान में होना चाहिए. आपका ध्यान इस पे थोड़ी होगा कि फल नहीं आया, फिर वो फ्लावर नहीं आया, ओहो मैं तो कितना परेशान हूँ, मैं तो कितना दुखी हूँ. ऐसे थोड़ी हम करेंगे. हम हर मोमेंट को अच्छे से जिएंगे. जब बीज बोने की बारी है तो हम अच्छा बीज बोएंगे, पॉजिटिव थॉट एफर्मेशन करेंगे, फिर हम उसको मेडिटेशन से वाटर करेंगे, फिर हम मास्टर की वॉइस सुनेंगे, हम उनकी रीडिंग्स रीड करेंगे, हम उनकी टेक्निक्स अप्लाई करेंगे. ये सब हम करते रहेंगे और हमारा सारा ध्यान इसी को एंजॉय करने में होगा. डोंट थिंक एंजॉयमेंट विल कम टू यू आफ्टर अ पर्टिकुलर लेवल. आज क्यों नहीं है? वाई आर यू नॉट एंजॉय इन दिस मोमेंट? क्योंकि आप अपना ध्यान भटका रहे हो. आप बाहर की सेंसुअल मूवी पे फोकस कर रहे हो, आप विड्रॉ नहीं कर रहे हो मूवी से, आप अंदर अपनी क्रिया प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और आप मास्टर के से अट्यून नहीं हो रहे हो. विच चैनल आर यू ट्यून टू? यू आर ट्यूनिंग योर सेल्फ, यू आर रेडियो टू द चैनल ऑफ सॉरो. दैट इज वाई यू आर सॉरोफुल. उसको चेंज करो, उसको ट्यून इट टू जॉय. देयर इज इटर्नल जॉय एग्जिस्टिंग ऑलवेज, अवेलेबल टू अस ऑलवेज. अगर हम जॉयफुल नहीं है, ये हमारी प्रॉब्लम है. गॉड ने जॉय बनाया हुआ हर जगह पे, एवर प्रेजेंट है, एवर अवेलेबल है. अगर हमें वो दिख नहीं रहा और फील नहीं हो रहा, दैट इज आवर प्रॉब्लम. दैट मीन्स वी हैव टू वर्क विद इट. Call upon the Guru to help you to feel that joy in every moment. Correct yourself, auto align, keep aligning, keep calling. छोड़ो ही मत, भगवान को छोड़ो मत, गुरु को छोड़ो मत, अपने आप जॉय फील होने लग जाएगा. सब समझ आने लग जाएगा कि ये सारा जो मोह माया है सब बेकार है. दुख किस लिए? हम मोह माया में घूम गए हैं, हम इस पिक्चर में घूम गए हैं, इसलिए दुख है हमें. उसको ट्रांसेंड करो इस समय. कल की वेट नहीं करनी है. मैं आज जो करूंगी या करूंगा, चाहे मैं वो एक फाइल वर्क कर रहा हूँ, या मैं बर्तन धो रहा हूँ, या मैं कोई भी कार्य कर रहा हूँ, उसमें ही मेरा जॉय है. आई एम हैप्पी, आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ. मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, ना मुझे कोई चीज़ चाहिए, ना मुझे कोई इंसान चाहिए. आई एम कंप्लीट इन माई सेल्फ. आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड एंड वट एवर आई एम डूइंग इज डूइंग विद गॉड्स विल. प्रॉब्लम कहाँ है इसमें? प्रॉब्लम तब आ जाती है जब हम अपने ही मैन्युफैक्चर्ड थॉट में खो जाते हैं, हम अपनी इमेजिन्ड सॉरो में खो जाते हैं. दैट देयर इज आवर प्रॉब्लम एंड वी नीड टू करेक्ट एंड विड्रॉ फ्रॉम इट. ओके, आगे बढ़ते हैं सूत्र 17 पे. इसमें पतंजलि कह रहे हैं दृष्टा दृश्य योह संयोगो हेया हितेह. मतलब दृष्टा कौन है? जो ऑब्जर्वर है, जो सीयर है, जो देख रहा है. दृश्य हो क्या है? जो हमें दिख रहा है, व्हाट इज सीन, द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन. संयोगो मीन्स उनका यूनियन. हेय दैट विच इज टू बी अवॉइडेड, एंड हेतु मीन्स द कॉज. इसका मतलब क्या है? द कॉज ऑफ द पेन कैन बी प्रिवेंटेड बाय
द यूनियन ऑफ द ऑब्जर्वर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। मतलब अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब स्वामी विवेकानंद पहले क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताओ कि सीयर कौन है, ऑब्जर्वर कौन है, ये बॉडी देख रही है या ये मन देख रहा है या कौन देख रहा है, दिल देख रहा है, हु इज द सीयर। नाउ यू टेल मी विद कॉमन सेंस कि क्या कौन सी चीज है जो इस दुनिया को देख रही है एक्चुअली, ट्रू सेंस में। इफ यू से मैं आई दिस बॉडी आई एम सीइंग, एंड देन वो जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, मेरे ब्रेन में बन रही है, मैं इसलिए मेरा ब्रेन देख रहा है। ब्रेन किस इंटेलिजेंस का हिस्सा है ये हम भूल जाते हैं, वो इंटेलिजेंस किसने बनाई है वो हम भूल जाते हैं, वो इंटेलिजेंस का प्योर सोर्स द सेल्फ है वो हम भूल जाते हैं। तो हम पूरी चेन को सिर्फ पहले 2-3 हिस्सों में देखते हैं और फिर कहते हैं कि बस मैं ही देख रहा हूँ। ऐसा नहीं है। जो लाइट और जो इंटेलिजेंस हमारे ब्रेन में वर्क कर रही है वो किसने बनाई है, वो कहाँ से आई है, उस चेन को पूरा एंड तक देखो ना। वो जो इंटेलिजेंस है वो गॉड की है, और एवर प्रेजेंट, ऑल प्रेजेंट, एवरीवेयर, ओमनी प्रेजेंट। वहां से वो इंटेलिजेंस जो है वो हमारे ब्रेन के थ्रू फंक्शन कर रही है और बॉडी को एक्टिवेट कर रही है। तो हु इज द ट्रू ऑब्जर्वर, ट्रू सीयर, ट्रू एक्सपीरियंस? इट इज द पुरुषा, द सोल। The soul is observing everything through the instruments of the eyes, the brain and so on. Okay. What is seen? अब दृश्य क्या है, दिख क्या रहा है आपको, क्या दृश्य दिख रहा है? ये सारा जो यूनिवर्स है, जो सारा वर्ल्ड आपके पास आसपास है, ये सारा इंक्लूडिंग, एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व योर माइंड एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग इन द मैटर ऑल्सो। सो वो सारा जो है वो दृश्य है। All the pleasure and pain arise from the interplay of Purusha and Prakriti. Prakriti मतलब nature, मतलब ये material world. And the false identification of the soul with the limited body and mind. So seer तो था, वो है पुरुषा, वो separate है। और जो सीन है जिसमें हमारी माइंड, बॉडी और सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये इन दोनों का इंटरप्ले हो रहा है। और हम ये दोनों जब यूनाइट कर जाते हैं तो हमारी प्लेजर और पेन वाला जो है गेम शुरू हो जाता है। तो जो योगी होता है वो क्या करता है, इनको सेपरेट कर लेता है। वो जान जाता है कि ये ऑब्जर्वर जो है, दृष्टा अलग है दृश्य से, और ये योगा टेक्निक से पॉसिबल होता है। स्वामी क्रियानंदा क्या बोलते हैं? द कॉज ऑफ दैट अवॉइडेबल पेन इज द यूनियन ऑफ दैट विच सीज एंड दैट विच इज सीन। तो वो कह रहे हैं कि पेन अवॉइडेबल है सबसे पहले, और उस पेन का कॉज क्या है? वही इंटरमिंगलिंग ऑफ द सीयर एंड द सीन। हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि जो ऑब्जर्व कर रहा है और जो हमें दिख रहा है ये सारा कॉमन है। ये दो सेपरेट चीज़ें हैं। इसीलिए जितना भी स्पिरिचुअल पाथ है वो आपको बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स से डिटैच करने के लिए आया है। व्हेन द सोल एंटर्स द बॉडी एंड वो अहंकारा में आ जाती है तो वो अपने आप को लिमिटेड सोचने लग जाती है। वो वही सोल, बट इट स्टार्ट्स टू आइडेंटिफाई विद द बॉडी एंड माइंड, एंड हियर इन दिस आइडेंटिफिकेशन लाइज द गेम ऑफ प्लेजर एंड पेन। तो करना क्या है? ये इसको डिसएंटैंगल करना है, पुरुषा और प्रकृति को डिसएंटैंगल करना है। सोल जो बॉडी माइंड से अपने आप को बॉडी और माइंड समझने लग गया है, वो है अलग, तो उसको हमें डिसएंटैंगल करना है। और डिसएंटैंगल करने के लिए हमने भी पिछले सूत्र में पढ़ा है क्या करना है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये सब करने से हमें समझ आने लगेगा that the real I, the soul I is separate from this body, is separate from this mind, is separate from this world of Maya. They are two different things, and let us not allow them to superimpose on each other and delude us. Delusion इसीलिए create हो रहा है क्योंकि माया superimposed है पुरुषा पे, प्रकृति superimposed है पुरुषा में। हम we are the पुरुषा, the soul, and this prakriti is playing the game around us. Okay? ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअली भी यदि हम समझ जाएं कुछ लेवल तक, तो धीरे धीरे ये इसका जो सार है ये एक्चुअल में आप असेंस तब समझोगे जब आप मेडिटेशन में इसको एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन इंटेलेक्चुअली अगर आपके पास एक गाइड पोस्ट होगा कि हाँ ऐसा स्क्रिप्चर्स में लिखा है, और जिस दिन आपको एहसास होने लगेगा ना कि ये हाँ अलग चीज़ें हैं, तो आप कहोगे यस द स्क्रिप्चर हैज़ बिकम ट्रू फॉर मी, एंड देन नोबडी इन द यूनिवर्स विल बी एबल टू फॉल्सिफाई दैट स्क्रिप्चर फॉर यू, क्योंकि आपने उसके सत्य को अपने अंदर धारण कर लिया है। तो यही गोल है। क्यों स्क्रिप्चर्स को बार बार सुनना चाहिए? क्योंकि वो एक गाइड पोस्ट बताते हैं, वो मार्ग भी दिखाते हैं, वो गोल भी बताते हैं, और फिर वो प्रैक्टिस की टेक्निक भी बताते हैं जो जिसको करने से हम उस तक पहुंच सकते हैं। मैप भी देते हैं साथ में। तो लेकिन ये सिर्फ सुनने से भी नहीं होगा, उसको उसके बाद ध्यान में डालना पड़ेगा, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
हर सिचुएशन में 2 मिनट भी आप खाली बैठे हैं तो वॉच कीजिए कि ओह दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम द वन हु इज गेटिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द बॉडी एंड माइंड. ऐसा हायर ट्रूथ आप यदि कॉन्टेम्पलेट करेंगे इंस्टेड ऑफ थिंकिंग थॉट्स की उसने क्या किया और इसने क्या किया, दिस आर यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम थॉट्स. दुनिया में क्या हो रहा है, नन ऑफ दुनियाज बिजनेस, योर बिजनेस टू फ्री योर सेल्फ. जो करने आए हो वो करो, टाइम मत वेस्ट करो. अपने आप को डिसएंटैंगल करने आए हैं हम यहाँ पे, उसी में ही सारा फोकस करो और उसको एंजॉय द प्रोसेस ऑफ दैट. ओके, व्हेन व्हाटएवर वी सी और एक्सपीरियंस seems real to us, it can cause us pain. So जो हमें आसपास बाहर दिख रहा है ये सिर्फ पिक्चर का हिस्सा है, हमें सेंसेस से वो डेटा हम ले रहे हैं, उसको हम रियल मान रहे हैं. तो स्वामी जी कह रहे हैं वही कारण है हमारी पेन का. जब हम असली रियलिटी को जान जाएंगे कि हम कौन है और असलियत क्या है, तब हम इस पेन से उभर आएंगे. नॉन अटैचमेंट देयरफॉर should be carried out to the point where nothing in this world seems real. We must rise above the pains in our lives, whether they are physical or mental. Under all circumstances, retain always an even mind. And I've tried this. I've tried this, that in even circumstances when people are like, sometimes for silly reasons people can yell at you because they don't know what they are saying. So, but if you stay calm at that moment, then the picture has ended for you basically. You don't get affected by it. You just be in yourself. You stay even-minded and in your heart you smile at the situation. When you do that, the picture has stopped for you. Nothing, you will know the dream quality of the movie at that time. लेकिन किसी ने एक शब्द बोला और आप बह गए उसमें, तो आप पिक्चर का हिस्सा हो. फिर आप कैसे ट्रांसेंड करोगे, कैसे नॉन अटैचमेंट हो करोगे, नहीं करोगे. तो लर्न टू स्टे इवन माइंडेड एंड चेयरफुल अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस. चाहे कोई प्रेज कर रहा है ना, जब चने की झाड़ पर भी चढ़ा रहा है, तभी भी अंदर से एक जॉय और ये होना चाहिए, ये आपको एहसास होना चाहिए कि भैया ये जो अभी मुझे डुअलिटी में ऊपर चढ़ा रहा है ना, ये कल को नीचे गिराएगा. तो ये सारा गेम है, मुझे तो हिस्सा लेना ही नहीं इस गेम में. और ये प्रेज भी झूठी और ये ब्लेम भी झूठा. सारा क्रेडिट तो भगवान का है, तो इसलिए गिव इट टू हिम. स्टे काम, स्टे इवन माइंडेड. बाहर जो हो रहा है होने दो. मतलब ऑफ कोर्स कोई आप पे बंदूक के चला रहा है तो आप अपने आप को, बॉडी को हाइड कराओगे ही, बट इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड, जस्ट स्टे पुट. Just say, God, this is your drama, not mine. It is, this world is not mine, this drama is not mine. I don't care. All I care is you. All I want is you. All I need is you. All I have is you. My life is your life. My mind is your mind. My heart is your mind. I am your responsibility. You take care. So give it to him. Every moment give it to him and detach yourself from this motion picture that is happening around yourself. I read some excerpts. आदि शंकराचार्य ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक है दृग दृश्य विवेक. इसमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो इस सूत्र को इलैबोरेट करने के लिए और समझने के लिए मैंने नोट करे हैं. सो विल जस्ट ट्राई टू रीड दोज पॉइंट्स. सो द फर्स्ट इज, ही सेज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर परसीव्ड बाय द सेंसेस. सो सारा जो डेटा है वो सेंसेस ने कैच कर लिया. द सेंसेस आर परसीव्ड बाय द माइंड. तो अब सेंसेस की प्रेजेंस और उनमें से जो डेटा फ्लो कर रहा है वो कौन किसके पास आ रहा है, माइंड के पास. द माइंड इज परसीव्ड बाय अवेयरनेस. सो एक उससे भी माइंड और ब्रेन से भी एक डीपर चीज है जो कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस इटसेल्फ है, वो परसीव कर सकती है कि ये थॉट्स हैपन हो रही हैं मेरे अंदर. वो अपनी बुद्धि को, अपनी अहंकार को, चित्त को और शरीर को, सबको एनालाइज कर सकती है. That awareness is who we are and that is self-illuminating. So एक इसमें ना एक एग्जाम्पल आता है कि हमारी प्रॉपर्टी है अवेयरनेस, हमें कहीं से मिली नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके पास एक उबला हुआ आलू हम लेके चलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है. अब आलू उबला हुआ है, पर क्या हीट उसकी आलू की प्रॉपर्टी है? नहीं, वो आलू की प्रॉपर्टी नहीं है, वो बोरोड प्रॉपर्टी है जो उसने गर्म पानी से ली है. आलू कैसे उबला? क्योंकि वो गर्म पानी में गया था. हीट जो थी वो आलू की अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, ना ही वो पानी की प्रॉपर्टी है. इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू हैव हीट? नो. वाटर ने वो प्रॉपर्टी बोरो करी फायर से. और क्या ये फायर की प्रॉपर्टी है हीट? यस. सो इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ फायर टू बी हॉट.
and it then the other things borrow its this property from the fire, चाहे वो water है फिर उसके बाद वो boiled potato है. So इसीलिए इसी तरह हम it is our true property is this quality is awareness. We are awareness, and rest of our mind, our brain, our senses borrow this quality from our consciousness, the soul, and then they play this game. So आपने क्या करना है, विड्रॉ करना है इस सीरीज से. आपको ये डीलिंग करना है, आपको ये जानना है कि ये मेरी अवेयरनेस इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ माई सेंसेस, दे आर ओनली ट्रांसमिटिंग डेटा. इवन माइंड इज ओनली ट्रांसमिटिंग सम collected data from the senses. The intellect is analyzing the little data it's receiving, but it is my pure consciousness and awareness which is illuminating all of this, because of which all of this is working. So ये डीलिंग करने से, विड्रॉ होने से इस ट्रुथ तक हम पहुंच जाते हैं. Okay. So in yes. this, how do you there's a very subtle difference between the consciousness and the awareness, so how do you put that point across? Consciousness and awareness is the same thing. Same thing. Yes. So awareness is the property of consciousness. Absolutely. So higher the consciousness, stiller is the mind, and then the clarity, deeper the clarity. That's right. So higher the consciousness means human consciousness, super consciousness is Christ, Christness से cosmic consciousness. उसमें क्या है, awareness of the true reality of the universe और ज़्यादा उजागर होता जा रहा है. आपकी अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है. ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आप सिर्फ बॉडी माइंड के बारे में सोच रहे हो, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में आप और हायर लेवल पे पहुंच के कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में सारा कुछ जान लिया. तो अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस पैरेलल चीजें हैं, दे आर ईच अदर, दे आर विद इन ईच अदर. So as Master said, all these thoughts are universally rooted, okay, and more higher consciousness we go, though we pick up the thoughts at that level. Okay, so that is I see the things around, and now the sutras which we are discussing now, it's got a they talk about the same thing but in a different perspective. That is right. Absolutely. So भगवत गीता भी सेम बात बोलेगी और पतंजलि योग सूत्र भी सेम बात बोलेंगे, बस वो थोड़ा सा जो टोन है, टोनल क्वालिटी है, उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, वो थोड़ा सा इंडिविजुअलाइज्ड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सेंट सेज और द अवतार हु इज ब्रिंगिंग दैट ट्रूथ टू अस. So yes, thoughts are universally rooted, and therefore an aware mind, the I-ness, once your I-ness expands to infinity, you are aware of all the thoughts that are present in the field, and therefore you can access anybody's thought. मास्टर कैसे एक्सेस कर लेते थे, किसी की भी थॉट, किसी के मुंह में क्या टेस्ट है इतना भी एक्सेस कर लेते थे, वो कैसा फील कर रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये एक्सेस करने के लिए हिज अवेयरनेस of everything, because his consciousness was expanded and awareness is similar to consciousness, उतनी ही expanded awareness है, इसीलिए हर पर्सन का, हर डिसाइपल का स्पेशली, वो ये सब जान पाते थे, अपने अंदर महसूस कर पाते थे. एंड राइट नाउ ऑल्सो डोंट थिंक गुरुजी कैन नॉट feel your thoughts or your emotions or what you want and what are your tastes and what is your health, everything he knows, everything about it. आप भी उसको हिडन छोड़ते हो, he knows everything because his awareness is universal, he is cosmic in his awareness and consciousness, he will know it. and आप भी जान पाएंगे, आप जब अपनी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करेंगे तो आप भी थॉट्स जान पाएंगे, बट वो हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल है एक्सपेंशन को, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना. ओके, all right. So another thought from the Drishya Viveka, we'll just do through these 2-3 thoughts so that we get more clarity on what we are trying to say. So Adi Shankaracharya says, mind splits the unitive awareness into the perceiver and the perceived, the subject and the object. So जो mind है वो माया का हिस्सा है, इसीलिए वो जो ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन है और जो सब्जेक्ट है उसको सेपरेट करता रहता है हमेशा, और मतलब उसको दो में डिवाइड करता है. बट एक्चुअली इवेंचुअली हम ये कहते हैं, अभी भी हम मैं, आई एंड गॉड को सेपरेट करते हैं. इवेंचुअली हमें उस ट्रूथ तक पहुंचना पड़ेगा दैट गॉड इज आई, दैट गॉड, आई एम ऑल्सो मेड ऑफ दैट गॉड सब्सटेंस एंड दैट गॉड हैज बिकम आई. तो हमें माइंड के लेवल से ऊपर आना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड दिस होल गेम, दैट द प्लूरैलिटी इज ओनली अ गेम. ये जो वैरायटी है ये सिर्फ गेम है, इवेंचुअली देयर इज वननेस बिहाइंड दैट. ओके, then he says, when the essential nature, that is pure awareness, is realized, all division is understood to be the product of the mind.
Okay, and for example, okay, we'll end with the story to understand this very simple thing. So एक बार एक जूलर होता है, उसको ना कुछ अपना सामान चाहिए होता है लॉकर में से, तो वो अपने बेटे को, उसका बेटा छोटा होता है तो वो बेटे को चाबी देता है और वो कहता है कि बेटा जाओ लॉकर में से ना थोड़ा गोल्ड निकाल लाओ। तो बच्चा जाता है, लॉकर खोलता है और बंद करके वापस आ जाता है, कुछ भी लेकर नहीं आता। तो पापा कहते हैं कि भाई क्यों नहीं लेकर आए? तो वो कहते हैं आपने कहा था कि गोल्ड लेकर आओ, वहाँ तो सिर्फ नेकलेसेस पड़ी हैं, बैंगल्स पड़े हैं, कुछ रिंग्स पड़ी हैं, ब्रेसलेट्स पड़ी हैं, गोल्ड तो वहाँ पड़ा ही नहीं है। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, जो वो ऑर्नामेंट्स हैं वही गोल्ड है, आप उसमें से कुछ भी ले आओगे तो मेरे तक गोल्ड पहुँच जाएगा। तो वो बच्चा समझ जाता है इस बात को। तो ये हम वो बच्चे हैं जो हमें समझना है इवेंचुअली कि जितनी वैरायटी यूनिवर्स में दिख रही है, कोई ऑर्नामेंट, कोई नेकलेस की तरह है, कोई ब्रेसलेट की तरह है, कोई रिंग है, बट इवेंचुअली उसका सेंस क्या है? गोल्ड है। इसी तरह हमारी इतनी कलर की, क्रीड की, साइज की, शेप की, नेम की, फॉर्म की, फंक्शन की वैरायटी जितनी दिख रही है आसपास, इवेंचुअली उसका एसेंस जो है the gold of creation है, means the God, the universal God itself, the universal God substance. उस एक consciousness से ही through thought, energy and matter ये variety create हुई है। और फिर जो माइंड है वो हमारे साथ गेम प्ले करता है, वो माया का हिस्सा है, वो हर चीज़ को डिवाइड करता रहता है, वो हमें इस अवेयरनेस तक पहुंचने नहीं देता दैट एवरीथिंग इज वन। तो ये जो गेम है ये कैसे एंड होगी? द सेम थिंग विच वी स्टार्टेड विद दिस क्लास। ये जो मोशन पिक्चर है इसको एंड करने के दो मेन तरीके हैं। फर्स्ट इज टू स्विच ऑफ द मोशन पिक्चर, दैट मीन्स टू स्टिल योर सेल्फ, calm the senses, calm the mind, calm the breath, and you will be able to perceive the screen on which the light is being projected. The other way is to understand, expand your knowledge through Jnana Yoga, and Jnana is accompanied by Karma and Bhakti. And then when you know who you truly are, then ये जो माया जाल है इसकी वेल हट जाती है और आप one God and one I पर केंद्रित हो जाते हैं, and the truth is revealed to us. So with that thought, my dear friends, we end today's class and we share this knowledge which dispels all darkness coming from our Guru by the grace of God. Let us share this with all souls everywhere. Let us pray together. Divine Mother, Thou art omnipresent. Thou art in all Thy children. Manifest Thy healing presence in all bodies, all minds, and all souls. Divine Mother, may Thy love shine forever on the sanctuary of our devotion, and may we be able to awaken Thy love in all hearts. Om Shanti, Shanti, Shanti.